अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और एक दफ़ा फिर आपको मैं एसके ड्रीम्स में वेलकम करता हूँ। आज के लिए मैंने जो ड्रीम सोचा है वो ये है कि अपने घर का जो प्लांट्स का जो एरिया है उसको थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं। जब आप कोई काम ख़ुद अपने हाथों से करते हैं तो उसके बड़े फ़वाइद हैं। एक तो ये है कि आप का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो हॉबी है उसके साथ साथ आपकी वर्जिश भी होती है, आपका एक्सरसाइज होता है। इसके अलावा आपको धूप में चलने फिरने का मौका मिलता है और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको नेचर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपके अंदर अगर एंग्जाइटी या डिप्रेशन वगैरह का कोई थोड़ा बहुत भी फैक्टर है तो वो सारा निकल जाता है। अच्छा व्यूअर्स, तो इसके साथ ही हम काम का आगाज़ करते हैं। तो पहले मरहले में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो ग्रास है इसको हटाया जाए और जो फ्लावर बेड के अंदर मौजूदा रबर की जो लाइनिंग है उसको भी निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि इस जो रबर की जो लाइनिंग है इसको क्यारी के बैक साइड पे जो फेंस का बॉर्डर है वहाँ पे लगाएं ताकि जो नापसंदीदा जो घास फूस है उसकी अफजाइश को हम रोक सकें। तो इसके साथ हमारा जो पहला स्टेप था ग्रास कटिंग और क्लीनिंग का वो ख़त्म हो गया है और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और इसकी जो एजिंग है उसके लिए हम प्लान करेंगे कि उसको कैसे बनाएं। We are going to make our flower bed and we are looking for something which is suitable for the edges. Yeah. If you use the 4x4s around the house, right? Yeah. It's kind of block, Okay. or you can go with something standard. We are just digging it in the soil. Put it in the soil. Yeah, into the soil. So half inside, half outside. Yeah, I would put it in there. I'd probably go with something like that, right? So if you go with these are the longest pieces. You probably like it. See? These we will take. Hello, how are you? I'm good. How are you? Okay. That would be two of those. Yeah, good. That would be $10.50, please. You get the tap over there inside the card for me. Thank you. Thank you. Thank you.
बारिश शुरू होने वाली है भाई। हमारा प्लान नेक्स्ट ये है कि ये इसकी फ्लावर बेड की लाइनिंग लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये लेके आए हैं, प्लैंक्स लेके आए हैं और इसके लिए अब डिगिंग करेंगे। पहले इसको प्लैंक्स को लेवल करेंगे और लेवल करने के बाद फिर इसके अंदर फिर हम सॉइल डालेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी बारिश भी शुरू होने वाली है एंड आई लव रेन। व्यूअर्स, बारिश शुरू हो गई है तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है और बारिश जब थम जाएगी तो इंशाल्लाह फिर बाकी जो है ना प्लैंक्स को इंस्टॉल करेंगे। level.
I hope this video regarding my backyard transformation inspires you to step into your own garden and make it more creative. In my opinion, gardening is not just about plants. It's a relaxing hobby, a form of physical therapy, a source of natural beauty, and a true joy all in one. Thanks for watching my video. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.